everyone and welcome back to the channel. I hope everyone is well and keeping fit. तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कैसे आप अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ टिप्स जो कि बिगिनर्स भी यूज कर सकते हैं और कुछ जो कि मोर एडवांस टेक्निक्स होते हैं। जब आपने 6 months to a year ट्रेन कर लिया तो आप जाके उन टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि इवेंचुअली जब आप फॉर एग्जांपल जिम जा रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, there comes a point where you need to further increase the intensity so the body can continuously, with the progressive overload, grow, develop itself a lot better as well. So सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करेंगे और वो है कि आपने फोकस करना है टाइम अंडर टेंशन पे, ठीक है। टाइम अंडर टेंशन का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप कितनी देर अपने मसल को टेंशन में रखते हैं जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हैं या डेडलिफ्ट कर रहे हैं या कोई भी स्क्वाट कर रहे हैं, तो आप उस मूवमेंट को जितना कंट्रोल करेंगे ना, उतनी ज़्यादा आपका मसल टाइम अंडर टेंशन में रहेगा। तो एक चीज़ है, उसे हम कहते हैं टेम्पो। फॉर एग्जांपल अगर आप 2-1-2-1 का टेम्पो यूज़ करें, तो ये पहले 2 का मतलब ये है कि आप कितनी आहिस्ता से उस मूवमेंट को नीचे को ला रहे हैं, जो नेगेटिव पोर्शन है। 1 सेकंड का पॉज ले रहे हैं, फिर उतनी देर 2 सेकंड की मूवमेंट ऊपर को लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो 1 सेकंड का पॉज जो टॉप ऑफ द मूवमेंट है उस पे ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो टेंशन है ना उस पर्टिकुलर मसल पे इंक्रीज होगी, क्योंकि आपका जो सेट है वो ज़्यादा देर चलेगा, क्योंकि आप बहुत फोकस कर रहे हैं कि उस मसल को आप ट्रेन करें। आप ये नहीं कि जल्दी जल्दी रेप्स मार रहे हैं, आप उस मूवमेंट को बहुत कंट्रोल्ड तरीके से कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एनीवन कैन डू दिस टेक्निक। इट्स important for beginners especially to do. It's क्योंकि आप जब शुरू कर रहे होते हैं, अगर आप अच्छी फॉर्म के साथ एक्सरसाइज करेंगे, good controlled tempo, you will see a lot better results. So that's number one way to increase your intensity. जो second method है वो है कि आप heavy weight उठाएं, ठीक है। For example अगर आप जिम आप जा रहे हैं for few months, तो आपने एक ही रूटीन पे कर रहे हैं, आप 8 to 12 की रेपिटेशन की रेंज में रह के वेट को उठा रहे हैं, लेकिन अब आपने नोटिस किया कि आपकी फॉर्म भी बहुत अच्छी हो गई है, आप 8 to 12 रेप्स कंफर्टेबली कर सकते हैं विद अ मॉडरेट वेट। आप ऐसे करें कि आप कुछ हफ्तों के लिए ना अपनी जो रेप रेंज है उसको चेंज कर दें। तो आप इंस्टेड ऑफ डूइंग 8 to 12 रेप्स, आप 3 to 6 रेप्स या 3 to 5 रेप्स की रेंज में आके ट्रेन करें, ताकि आप मसल को बेसिकली आप ओवरलोड करेंगे जब आप हैवियर वेट उठाएंगे, एंड दैट विल रिजल्ट इन योर स्ट्रेंथ डेवलपिंग एज वेल, बिकॉज 3 to 5 रेंज is for strength training. So also it will give a shock to the muscle, and you will be progressively overloading it, which will force it to grow, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने मसल्स को शॉक करने का, कि आप ज़्यादा heavier weight उठाएं, अपनी rep range जो है उसको थोड़ा सा decrease करें। तो do that for a few weeks, see how your body responds, and then obviously उसके बाद आप फिर again अपनी जो exercise routine है फिर से couple of months के बाद change कर सकते हैं। लेकिन I'm 100% sure कि ये method definitely will result in increasing the intensity of your gym routine, your routine at home. तो इसको ज़रूर implement करें। Thirdly जो आप use कर सकते हैं एक टेक्निक है, उससे हम लोग basically reducing your rest periods, ठीक है। ये कोई भी कर सकता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आप 60 सेकंड का रेस्ट पीरियड ले रहे हैं, there's a longer time for your body to recover and recuperate, and then you can go and give it your all to that exercise. लेकिन अगर आप अब उस एक्सरसाइज के रेस्ट पीरियड को 30 seconds के लिए कर देंगे, तो obviously आप उतना ज़्यादा रिकवर नहीं कर सकेंगे जितना आप 60 seconds में कर सकते हैं। So your body will be still in the high intensity phase, ठीक है। तो आप फॉरन एक्सरसाइज कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप सर्किट ट्रेनिंग कर रहे हैं या कोई हिट सेशन कर रहे हैं, अगर आप 10 seconds का रेस्ट ले रहे हैं, you can reduce to 5 seconds just to increase the intensity. So you'll work for 20 seconds, 5 second rest, 20 seconds work, 5 seconds rest. You'll notice a huge change in how intense that routine will become. And likewise अगर आप weight training कर रहे हैं, तो अगर आप 1 minute का रेस्ट ले रहे हैं या 1.5 minutes का रेस्ट ले रहे हैं, instead of that आप 45 seconds का रेस्ट पीरियड लेना शुरू कर दें। Obviously हर एक्सरसाइज पे नहीं, स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस को आप चूज करके उनके रेस्ट पीरियड्स रिड्यूस करें, और आप फिर नोटिस करेंगे कैसे आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी इंप्रूव होगी, क्योंकि आप ऑब्वियसली शॉर्टर टाइम में शॉर्टर रेस्ट पीरियड ले रहे हैं, उसकी वजह से कार्डियो भी इंप्रूव होती है। तो फोर्थ टिप ये है कि
drop sets को इस्तेमाल करें. This is a more advanced technique. If you've been training for 6 months to a year, then you start implementing the techniques which I'm going to talk about from now on. So the first one is drop sets, right? Drop sets का क्या मतलब है कि आप, for example, आपने 20 kg के साथ dumbbell curls किए हैं for your biceps, ठीक है? तो आपने अब उसके साथ आपने उस सेट में 10 reps मार ली. आप straight away आप weight को 30 to 40% decrease करेंगे. वहाँ पे जाके आप for example 12 kg का dumbbell उठाएंगे straight away और उसके साथ जितने reps आप कर सकते हैं between 8 to 10 आप उतने reps करने की कोशिश करेंगे. इसकी वजह से obviously exercise की intensity increase होगी क्योंकि आप और ज़्यादा burden डाल रहे हो और ज़्यादा strain डाल रहे हो उस muscle पे as you are constantly doing that exercise for at least 20 reps with the drop set. तो आप obviously drop sets के साथ ये है कि आप जितने मर्जी drop sets आप डालना चाहें आप कर सकते हैं. Often एक अच्छी एक्सरसाइज है जब आप lateral raises कर रहे होते हैं for your shoulders, तो उसके साथ लोग ये करते हैं कि आखिरी सेट के बाद वो ना ड्रॉप सेट मल्टीपल ड्रॉप सेट्स करते हैं. सो बेसिकली इट्स कॉल्ड रनिंग द रैक. सो फॉर एग्जांपल आपने 12 kg पे lateral raises किए 8 to 10 reps, फिर आप 10 kg को यूज़ करेंगे, फिर आप 8, 6, 4, 2 ऐसे करके मल्टीपल ड्रॉप सेट्स कर सकते हैं and you will feel the burn on that muscle. So ये only specific exercise के साथ करना चाहिए ऐसे running the rack. लेकिन majority of the exercise के साथ आप single drop sets easily अपनी जो routine है उसके अंदर include कर सकते हैं, ठीक है? तो जो अगला टिप है वो है supersets, ठीक है? Supersets एक बहुत ही excellent method है to increase your exercise intensity. It also helps in reducing the amount of time that you are working out, ठीक है? तो supersets का क्या मतलब है? Supersets का basically ये मतलब है कि आप एक exercise के बाद दूसरी exercise कर रहे हैं. तो इसमें हम लोग कर सकते हैं बेसिकली एक आप या तो आप सेम मसल ग्रुप के सुपरसेट्स कर सकते हैं या आप ऑपोजिट मसल ग्रुप्स के सुपरसेट कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर आप सेम मसल ग्रुप के कर रहे हैं तो आप चेस्ट को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारा एग्जांपल. एक आप करेंगे कंपाउंड मूवमेंट चेस्ट की जैसे बेंच प्रेस है, उसके साथ आप स्ट्रेट अवे सुपरसेट करेंगे डम्बल फ्लाइज. तो ये आपकी आइसोलेशन मूवमेंट है. तो आई वुड रिकमेंड कि आप ऐसे सुपरसेट्स करें rather than doing two compound movements for the same muscle together. So the other way is कि आप chest और back को train कर रहे हैं एक दिन में. So आप chest के लिए bench press करेंगे और साथ ही straight away आप back को train करें तो आप barbell rows for example या lat pull down करना शुरू कर देंगे consecutively and that will be one set basically, ठीक है? कि आपने chest को भी train किया, back को भी train किया, फिर आप अपना rest period लेंगे उसके बाद. So fantastic way to increase the intensity and be sure to use this method once you have actually been training for at least 6 months to a year, क्योंकि ये advanced techniques हैं जब आपकी body को exercise intensity increase करने की ज़रूरत होती है to develop further to improve and reach your goals, ठीक है? Because the body is always looking for progressive over to better itself. तो अगला टिप है वो है नेगेटिव रेप्स को इस्तेमाल करें. अगर कोई और नहीं काम कर रहा है और आप एक प्लेटो में फंसे हुए हैं तो आप नेगेटिव रेप्स का इस्तेमाल करें. नेगेटिव रेप्स क्या होते हैं? नेगेटिव रेप्स ये होते हैं जो बेंच प्रेस का एग्जांपल फिर से ले लेते हैं. जो आपकी जब आप मूवमेंट को नीचे को लेके जा रहे होते हैं ना उसे कहते हैं नेगेटिव रेप. वो आपके नेगेटिव पोर्शन ऑफ द एक्सरसाइज है. तो अ लॉट ऑफ द टाइम्स लोग obviously ज़्यादा जल्दी नीचे ले जाते हैं तो we don't have as much strength when we are developing when we are moving it down. और जो downwards movement होती है ना, जो भी negative portion है जो सी भी exercise का आप करें उसमें काफ़ी ज़्यादा muscle tear occur होता है. We don't really realize how much movement, how much amount of tears that are happening during the negative portion. So focus on the negative portion. तो negative rep आपने करना कैसे है? तो basically आपने क्या करना है? bench press कर रहे हैं तो someone आपके पास कोई ट्रेनिंग पार्टनर होगा या कोई भी जिम से आप उसको पूछ रहे हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे आई एम श्योर. तो उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने आपको ऑब्वियसली जो पॉजिटिव रैप है ना उन्होंने they're going to help you pick it up and you are going to control the negative motion the negative portion very slowly down to your chest और फिर वो आपको हेल्प करेंगे वापस ऊपर को पुल करने के लिए push करने के लिए. So they'll help you bring it up, then you control the negative motion back down. So that's called a negative rep, ठीक है? And you should aim for at least the negative rep to be like between 3 to 5 seconds. Negative portion होना चाहिए ताकि आपको burn महसूस हो, क्योंकि आप जो positive part है movement का वो आप नहीं कर रहे होंगे क्योंकि someone else will be lifting it up for you. So you have to focus on the negative part.
ये टेक्निक अच्छा है for specific exercises, ठीक है? So you can't use it on all exercises. There's no point in doing it on isolation movements. So you'd rather do it on compound movements, ठीक है? So last tip is rest pause. The rest pause भी एक बहुत important technique है. Obviously आप इसको जब भी इस्तेमाल करना चाहें more advanced stage में use करते हैं लोग. So for example अब again bench press को use करते हैं. तो अगर आप bench press कर रहे हैं rest pause के लिए, आप ऐसे करेंगे कि आप 10 reps करेंगे, ठीक है? आपने 10 reps कर लिए हैं, तो आप 10-15 second का rest ले लें. Normally I went for 10 seconds, so 10 second का rest लिया, count in your head to 10, and then straight away with the same weight आपने क्या करना है, आपने और reps मारने की कोशिश करनी है, जितने भी आप कर सकते हैं, whether that's 1, 2, 3, that's entirely dependent upon your own strength and the amount of weight you are lifting. So if you have the energy, you try to go for more. If you don't, you try to get as much as you can in that after that rest pause. So it's a very easy way to actually increase the exercise intensity. So these are the few tips that you can use to actually increase the intensity of your exercise, develop your body further, provide your body with progressive overload and to stimulate it further, ठीक है? तो आपको ये recommend करूँगा कि आप obviously सारे techniques एक session में ना use करना शुरू कर दें, the tools. तो और जो drop sets है, super sets हैं, rest pause, negative reps, या heavy weight पे focus करना काफ़ी देर के लिए, ये बहुत ही taxing होता है आपके central nervous system के ऊपर. So you need to basically space these things out. आप एक session में कुछ exercise के लिए drop set कर लें, like after a few weeks start implementing supersets in as well, and make sure you are getting adequate rest after all this, after all increasing your exercise intensity through these ways, because your body recovers when you are resting. It's very important to remember that it recovers, grows and comes back stronger while you are resting, not while you are training in the gym. Gym में आप सिर्फ उसको एक stimulus दे रहे होते हैं. So hopefully you've all understood कि कुछ techniques जो मैंने भी इस्तेमाल की हैं, and I still keep using them today now, and they're very much a part of my training routine. So and they're effective, they're proven methods. So hopefully you've understood how to increase your exercise intensity. Stay safe, stay healthy, like, comment, subscribe, and hopefully I'll catch you in the next video.